So in this lecture we will discuss respiration. Like these are the four life processes: nutrition, respiration, transportation and excretion. तो न्यूट्रिशन हमने डिस्कस कर ली, प्लांट्स में भी और ह्यूमन में भी. अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक है वो रेस्पिरेशन करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट रेस्पिरेशन. So respiration basically is an oxidation process to digest the food, intake of oxygen and exhaling of carbon dioxide. So respiration, the process in which an organism obtained energy by combining oxygen and glucose. By combining oxygen and glucose is called respiration. Okay, and it involves breathing. Breathing. Intake of oxygen, outgoing carbon dioxide. Okay, inhalation, exhalation. So in this respiration we can say that any food which we take that go into our alimentary canal, digested there, okay, by various processes that we are already discussed, that go through mouth, then to teeth, then to the salivary glands, through esophagus it reaches to stomach, okay, where it meets some enzymes, HCl, mucus, then it moves to small intestine by aspengental, that muscles are there which release the food from the stomach to intestine. In intestine it get alkaline medium, get that trypsin there, that convert protein into mannose. I have studied in last lecture. And then when this glucose which we take from outside and which is converted, like if you take cellulose or starch or any food that convert into glucose, okay, carbohydrate that convert to glucose. Now when glucose combined with oxygen, then that organism get energy. Then what is oxygen that we inhale during the breathing? Okay, that process is called respiration. So what respiration is basically is a process by which the organism that produce energy, that obtained energy by combining oxygen and glucose. Glucose कहाँ से आया? Food में से. Oxygen कहाँ से आएगी? Inhalation. When you inhale oxygen, you give, exhale carbon dioxide. That is also called breathing. Okay. So there are two types of respiration. There are two types of respiration. Number one, इसमें से लेते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है, that is called aerobic respiration. Aerobic respiration means the process of producing energy in the presence of oxygen. Aerobic respiration means the process of producing energy in the presence of oxygen. Okay,
So there is one more type of respiration that is called anaerobic respiration. Anaerobic respiration. Anaerobic respiration means process of producing energy in the absence or lack of oxygen. You know, absence means totally oxygen is not there. Lack of oxygen means oxygen is present in lesser amount. So there is a difference between these two words, absence and lack of. So what is respiration? This is one of the very important life process which is used to produce energy by combining oxygen and glucose. Glucose कहाँ से आ रहा है? That's come from food, and that come from food and oxygen that will inhale during the respiration. So अगर तो respiration हो रही है in the presence of oxygen, उसको aerobic respiration बोलते हैं. अगर हो रही है in the absence of respiration, तो उसको हम बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन. कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं हमारे पास जिसमें इनऑर्गेनिक रेस्पिरेशन होती है. तो इसमें जब भी ये रेस्पिरेशन होगी तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होगा दैट विल बी द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, है ना. द फर्स्ट स्टेप, की स्टेप इन रेस्पिरेशन. तो की स्टेप क्या होगा? ब्रेकडाउन ऑफ glucose 6 carbon molecule into 3 carbon molecule called pyruvate. ओके, तो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी. ग्लूकोज होता है C6H12O6. सो दिस इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल जिसमें 6 कार्बन है. ओके, दैट विल ब्रेक डाउन टू pyruvate, means that is a 3 carbon molecule. Pyruvate, 3 carbon molecule. Okay, so 6 carbon molecule that undergoing to change into a 3 carbon molecule, that is known as a pyruvate. And when this glucose that undergo, this will take place in the cytoplasm. All these things that take place, this process is going to take place in the cytoplasm. And when this takes place, so when glucose converted to pyruvate and along with small amount of energy that also produced, that energy produced. So when glucose 6 membered carbon change into pyruvate 3 carbon, along with energy is produced. So this energy is produced in the form of ATP that we will discuss later on in this lecture only. So this is the overall respiration process. The key step of respiration is that glucose molecule, which has a 6 carbon, that changes to a pyruvate 3 carbon molecules plus energy is released, and this will take place in the cytoplasm. Okay. After that, what is the fate of this pyruvate? ये पायरुवेट आगे क्या बनेगा, उसका जो क्या फेट है, कहां पे जाएगा, that depends upon the presence of oxygen, whether there is a full oxygen or there is a lack of oxygen or there is a totally absence of oxygen. So next we will summarize the overall respiration process. So first क्या था, we have a glucose. Glucose, a formula of C6H12O6, we know, is a 6 carbon molecule. We're starting with this glucose. Then we move to next carbon, next process in cytoplasm. In cytoplasm, मैंने बताया था आपको कि साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा पायरुवेट में. Pyruvate, that is a 3 carbon molecule, प्लस इसके साथ क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी, है ना. सो ये सब प्रोसेस किसमें हो रहा है, साइटोप्लाज्म में. अब इसके बाद
इसके बाद डिपेंड करता है कि आपकी ऑक्सीजन की प्रेजेंस कितनी है, वेयर देयर इज अ फुल ऑक्सीजन, है ना, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, और वेदर देयर इज अ टोटली एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो डिपेंडिंग अपॉन दैट, पायरुवेट हैज अ these three, the fate of pyruvate is like this. Okay, if there is a totally absence of oxygen, है ना, absence of oxygen, east में, so this pyruvate that decompose, it produces ethanol. Ethanol, as you know, is C2H5OH. This is 2 carbon molecule. So it further decomposes to 2 carbon molecule plus carbon dioxide plus energy. This is the fate of pyruvate when there is an absence of oxygen. If oxygen is not there, lack of oxygen. Oxygen की कमी, lack means not totally absent, but oxygen is present very lesser amount, है ना. तो ये होता है in our muscle cells. जब हम थोड़ा सा तेज दौड़ते हैं तो मसल सेल में ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो वहां पे ये पायरुवेट चेंज हो जाएगा लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी में. तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड जो है वो बन जाएंगे. लैक्टिक एसिड भी जो है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, जस्ट चेंज हो जाएगा 3 कार्बन से 3 कार्बन लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से क्रैम्प्स पड़ जाते हैं. अगर होगी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन बहुत प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा. माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, जहां पे रेस्पिरेशन होती है. माइटोकॉन्ड्रिया, दिस इज द पावर हाउस ऑफ द सेल where the respiration takes place. Okay, then it produces carbon dioxide, water and energy. So this is the overall process, है ना. We start from glucose. In cytoplasm, glucose change into the pyruvate, 3 carbon. This is the key step in respiration. After that, depends upon the oxygen, whether the oxygen is present in excess or oxygen is totally absent or oxygen is present in limited amount, है ना. Then the process break up 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecule of carbon dioxide. Water बनेगा, है ना. That is called aerobic respiration. So this last step is taking place in mitochondria because there is a presence of oxygen. So this is called aerobic oxidation भी कह सकते हो. This is its aerobic oxidation or aerobic respiration भी कह सकते हो. तो रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज नॉट ग्रेटर देन एनारोबिक. जो एब्सेंस में है ये इसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक. एनारोबिक रेस्पिरेशन भी कह सकते हो, ऑक्सीडेशन भी कह सकते हो. ये जो एनर्जी है और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी ज्यादा होगी इससे. एरोबिक में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज ऑलवेज मोर देन द एनारोबिक रेस्पिरेशन. समटाइम व्हेन देयर इज लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, थर्ड पाथवे that break down, pyruvate is break down into lactic acid, which is also 3 carbon molecule. So this buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity cause cramps. तो जिसकी वजह से cramps पड़ते हैं, वो ये प्रोसेस है जिसमें ये lactic acid जो है वो प्रोड्यूस करता है. Okay? So energy released during the cellular respiration is used to synthesize molecule called ATP. अब जो एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है या इसमें प्रोड्यूस हो रही है, दिस एनर्जी आर लिटिल वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस और टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी. तो ये मॉलिक्यूल जो है एनर्जी जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करने के काम आती है. तो हम एक प्रोसेस ओवरऑल फिर लिखते हैं. ओके, सो हमारे पास क्या था, वी आर एट हियर ग्लूकोज C6H12O6
ओके। इन साइटोप्लाज्म क्या होता है, इट चेंजेस इनटू पायरुवेट प्लस एनर्जी and then presence of oxygen. This is aerobic respiration. It produces carbon dioxide, water, energy. This energy is used to sensitized molecules called ATP. So this is the energy currency of life. ATP is called energy currency of life. ATP की full form क्या होगी, adenosine triphosphate. इसमें phosphate होते हैं. This is the energy currency of life. So in a respiratory system of human, this ATP is the energy currency of the life. Okay. So now what about the human, this ATP molecules, ATP is the energy currency for most cellular processes. Energy released during the process of respiration is used to make an ATP molecule. From ATP molecule and phosphate. How this ATP is produced? How this ATP is produced? ATP is produced by ADP, adenodiphosphide plus phosphate P, and this energy. Okay. The energy produced during the respiration, that produces ADP with phosphorus, that is equal to ATP. So this is the way how the ATPs are produced in the body. So the energy released during this process, aerobic respiration, and ADP and phosphate. When the ADP and phosphate they combined, inorganic phosphorus है ये, ठीक है, inorganic phosphate है. When they combine in the presence of energy which is released during the aerobic respiration, it produces ATP. Human respiratory system. Now this human respiratory system that consists of basically a nose, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, lungs and diaphragm, है ना. First thing is the oxygen that reached air, the air in which there is a rich amount, more amount of oxygen, that's called oxygen rich air, that is taken into the body through the nose. तो nose के through air जो है वो अंदर जा रही है. Air is filtered by the fine hairs, okay, present in the nose. तो जो नोज में हेयर्स हैं उसके साथ एयर जो है वो फिल्टर हो जाती है. एंड फ्रॉम द नोज एयर पासेस थ्रू द थ्रॉट्स टू द लंग्स. तो थ्रॉट के थ्रू लंग तक चली जाती है. जहां पे आप डायग्राम में देख रहे हो नेजल कैविटी है और नीचे जो है हमारा माउथ है, विंड पाइप है, एक फूड पाइप है, जहां पे दोनों मिलते हैं. कॉमन पॉइंट है ऊपर, उसको फेरेनेक्स बोलते हैं, PHARYNX. उसके नीचे लैरिंक्स है. और ये जो पाइप है विंड पाइप बोलते हैं इसको. तो विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं, TRACEA. ट्रैकिया आप डायग्राम में देखो. और आगे जाके क्या होता है, लंग्स में द एयर पैसेज है ना, ऊपर ट्रैकिया से एयर आ रही है नीचे, तो वहां से आगे एयर पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स. तो वो ब्रोंची में एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड दो लंग्स हैं, तो दोनों साइड पे जो डिवाइड हो गया उसका पैसेज एयर का, तो उसको ब्रोंकी बोलते हैं. नजर आ रहा है आपको, दो में डिवाइड हो रहा है. ओके. अब उसके बाद फर्दर जो है डायग्राम, उसमें लंग्स के आगे छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, उसके आगे और छोटी हैं, और फाइनली क्या मिलता है हमें, एलोवेलिस. इट इज बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. जैसे इंटेस्टाइन में था ना छोटी छोटी विलीज दैट इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे है ये छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर है आगे जाके लंग्स के अंदर, जिसको हम एल्वेलाई बोलते हैं. और एल्वेलाई में एक्सचेंज होती है गैसेस की. वहां से उसकी जो वॉल है एल्वेलाई की, वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड है. जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ब्लड के अंदर है ना, हीमोग्लोबिन उसे ले लेता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन में चलेगी, HB मतलब हीमोग्लोबिन, तो वो ब्लड पूरी बॉडी में जो है एनर्जी को ले जाएगा, है ना. उसके बाद
क्या होगा, जो हीमोग्लोबिन है पूरी बॉडी से कलेक्ट करके वापस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा एल्वेओली तक, तो वहां से वो थ्रू एक्सहालेशन बाहर चली जाएगी। तो ये पूरा सिस्टम है इसमें, जैसे कैसे दो में डिवाइड हो रही है, फर्दर उसकी जो स्ट्रक्चर है वो उसमें बहुत ही ज्यादा ब्रीक छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो ये जो है स्ट्रक्चर ये जो है दैट इज ऑफ एल्वेओली। सो दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन इन दिस लाइफ प्रोसेस।